Right. Since two of us are here, two candidates are here, please, I would request you, all of you, to please switch on your videos. Hello, Sunita ji, how are you? Hello, sir. Doing great, sir. Thank you. How are you doing, sir? Yeah, I'm good too. Hope you're doing well, sir. Just Yeah. me that you went through some Hmm. accident or hope Okay, you're okay. So, I mean, if you could tell something about your background, I mean, uh, why have you got this? How do you get this interest in astrology and KP astrology? Something about it. so basically I'm an healer and I do Mhm. tarot card reading. Right, And so to just upgrade my knowledge, I always wanted to learn something very accurate. Like right. tarot is like 95% accuracy. So Hmm. I thought, why not to join the astrology course? And particularly, I wanted to join KP because we can Hmm. predict a lot of events. Like comparing to Vedic, I think KP is the one where we can predict with short accuracy. So I wanted to learn this. And when I saw Yagya Right. ma'am's status, and that was the time I didn't even think twice, and I enrolled myself. Great. Okay. Right. So I see here one of my old students, Manaswini, is here. Yeah. Hello again, sir. Yeah. Hello. How are you? I'm fine. Good to see you back again. Great. I'm very happy that you joined this class. Yeah, I did a few classes from Hmm. with you. Hmm. I liked your teaching, so I thought, and since I already had interest in Hmm. this astrology, I don't know what is Vedic, what is KP. Like Hmm. Sunita ji said, she must have had some Hmm. knowledge, but I don't. I'm Hmm. just going to start from zero. So I hope Yes. you'll be able to fill me in. Sure. See, one thing, let us make this thing very clear in the first class itself. See, generally what happens is I have seen many astrology courses, astrology classes. Whenever it comes to Vedic, especially KP, the student strength in a batch is quite less. Okay. I have not seen any class, even great teachers. My own teacher, who is one of the stalwarts in Krishnamurti Paddhati astrology nowadays, Dr. Gaurav Agarwal. I have seen that in his classes also, the number of students in a batch in KP, it hardly ever crosses the number of 6 or at max 7. Okay, not more than that. So it's good that we are a small batch. That way, our interactions would be more. Okay, and we would be more flexible to it. We can look into more charts, more analysis, right, and more interactions could be made, so that our learning could be much more easier and at the same time much more accurate. Right, we can use the most of the time that is available, that will be available to us. So, as Sunita ji, I think we are meeting for the first time. So, due to my some professional, uh, you know, uh, appointments and all, there might be situations when one or two classes might have to be adjusted a bit, from maybe say Monday, it has to be shifted to Tuesday, or maybe from Thursday to Saturday. But I will inform about it well in advance, so that you don't get any problem, and accordingly we can manage. So ideally this session, this particular class will consist of about 20 to 22 classes. So 22 classes will be there, no, not an issue in it, and we'll practice plenty of charts. Okay, if other candidates join this course, then also it will be there. But we are going to practice plenty of charts, so that we will try to complete our course within 20 to 22 classes. So even if due to some reason some class gets dropped in a particular week, it will be compensated. And if some
the class timing needs to be adjusted, say in a particular week, some class has to be adjusted to a different day, I'll inform it well in advance. No issue in it. But one thing I can assure you, that at the end of this session, if you manage to do this 2022 classes, at the end of this session, you would be absolutely prepared to do consultation on your own. Not only will you be able to look at your own horoscope, at the same time your friends' horoscopes, but you can also look into your client's horoscope. No problem in that. You can take this in a very formal and in a very professional way. Okay, so if you have this idea that you will set up your business by the time, if I can say, by November, you would be well and truly prepared to start your journey in this field of KP astrology. And whatever you do, whether you are into any private service or whatever you are doing, astrology, it is a huge market. And especially after COVID, since things have gone a lot online, so a huge world market has opened up. And previously what used to happen, people used to visit astrologers in their chambers and they used to speak about their problems and discuss things. Now, due to availability of this internet and with this so much popularity about online business and everything, you can get clients from everywhere. I mean, you can get clients from USA, you can get clients from Canada, Dubai, England, not an issue. Okay, so it has opened up the market for us. And to be very honest with you, although the market is huge, but proper astrologers to cater to the needs of these people, of this 21st century people, that is quite less. Because traditional astrology is not very much popular amongst Europeans or, in states. So Krishnamurti Paddhati is one such thing, and I'll explain why it is so much popular and very accurate for the foreigners. And the foreigners, they always are very much interested in Krishnamurti Paddhati. While I'll explain these things in details in our class. So basically, in this first class, let us first try to analyze or understand that what is Jyotish and what we are going to try to achieve. Okay, generally we have this misconception. I say this misconception that we try to predict future about a client, that what is going to happen in your life, maybe tomorrow or maybe 6 months later, what kind of life you are going to lead, what kind of problems you are going to face, all these kind of things. That we think that is the job of an astrologer. Maybe it is the job of an astrologer. But in our traditional system, in Hindu astrology is a term which what we used to call in Hindi or in Sanskrit, what we refer to astrologers traditionally. We use this term Jyotish, right? So Jyotish is someone who is basically showing you light. He's someone who is showing you light, who is showing you Jyoti in terms of need. When your life will be full of darkness, a Jyotish is going to shine some light on your life. That is the purpose of a Jyotish. So traditionally, the opportunity or the you can say the aspect of Jyotish is not only limited to only predicting your future, but at the same time guiding you to come out of the problems that you might encounter in your future. So nowadays you will find that counseling is a very popular business. Career counselors are there, marriage counselors are there, counselors for looking into children's affairs. Okay, so Jyotish is nothing but a counselor. You have to think in that line. If you have to be a good astrologer, you have to think in the line of being a good counselor. If most of the cases, what happens is astrologers tend to predict future,
and they want to sell some kind of remedies, that you buy this stone, you wear this rudraksh, you wear this kavach, you do this yajna and everything. See, a lot of money is there in this field. You can earn in millions. There is no doubt in it, because in these products of stone and rudraksha and everything, there is a lot of profit to be made, because these are of, basically they have fancy price. Okay, you cannot say that what is the MRP of a particular stone or a particular rudraksh. That depends on you, how much money you are making out of one transaction. So a lot of money is there to be made, but you are going to make the money only when the client starts believing in you, starts having faith in you. And the only way you can gain his or her faith is by becoming a good counselor. Okay, you have to be able to understand their problem, why this person has come to me. Nobody comes to an astrologer when their life is going good. If that person has come to an astrologer when things are all good, then you have to say, you have to believe that he or she has some other intentions. He's trying to waste your time or making some fun. Generally, when people comes and meets an astrologer, he or she is having some problem. Out of that, he or she wants to come out. Now, in medicine, in the field of medicine practice, Manashwini will be more accustomed to this field. If you look at good doctors, the doctors believe that most of the ailment lies in the mind of the patient. Okay, so if a doctor talks with you, listens to your problems, listen to you, what kind of problems you are facing, just simply listening to the patient, that eases their pain to a great extent. And when a doctor who listens to a patient patiently, looks into their problems, speaks and communicates with them well, okay, tries to make them understand what kind of situation they are in. Okay, the behavior, the words that come out from the mouth of a doctor, words have power. Okay, so that heals 50% of the disease. The remaining 50% is taken care of by the medicines, yes, but a large part of those diseases are cured by the doctor, how he or she is treating the patient. Connecting with the doctor. Yes, connecting with the patient rather, right? So in case of astrology also, you have to connect with your clients in a deep-rooted manner, so that the client starts having faith in you, starts believing you, starts considering you as their friend. Of course, it has some other drawback, because I have faced this many times in my life. What happens is, there are some clients you will find who are very toxic, very negative, and their life is also full of negativity. Now, when they find you as a person who can heal their ailment, they try to get rid of their negativities in a big way. There will be clients who will come to you and they will absolutely blabber about their life, the problems they are facing, the negativities that is there in their life. Now, these negativities, these negative energies also have a toll on your health and your well-being. This I have faced personally. Okay, many times I have faced situations when I myself is not feeling well. Okay, there will be clients who would be so negative, their aura, their negativity would be so high. The places from which they are coming, the vastu of the places are so bad that interacting with them for a long time, you will feel some kind of problem in your health. Okay, so at the end of this course, I will also teach you a method of cord cutting. Okay, so that you can get rid of these negative energies. Okay, that will also be there. And as a additional bonus, I can assure you that your personal charts, both of your charts, if you are willing, I can
give you some sessions where I can go through your personal charts as well, separately, of course. So this is about Jyotish, the basic of Jyotish. Okay, that what we are trying to do. We are going to become counselors. Now, counselors, modern day counselors, they apply various tools and techniques. They go through, they have different questionnaires, psychometric test and everything to get a glimpse of your mind. But we astrologers, Jyotish, we have the Lagna chart. That one Lagna chart is the birth chart that gives the entire details of the life of your client. And that Lagna chart cannot be changed in any way. Okay. Of course, planets always, all planets are not active. I will teach you when I'll teach you the time period of planets, the Dasha, Mahadasha, Antardasha, these periods, also the transit of planets. Okay. So you will understand that all planets are not active at all times. Say in my chart, if you see that there are 9 planets are there, they are placed at different houses, different cusps, different rashis. But I will not get the result of all these planets at the same time. Okay. The periods of these planets have to be broken down. And all these things will be given in the chart itself, the time periods. That during which time periods, which planet is active. And I will get the result of those planets only at that particular time. Along with that, there is a concept of transit, जिसको हिंदी में गोचर कहा जाता है. गोचर के बारे में सुना है सुनीता जी? Yes sir, but मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, बट थोड़े थोड़े वर्ड्स जो आप बोल रहे हो सिमिलर लग रहा है. सुना. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब समझाऊंगा. इसमें कोई, अब मैं जस्ट जिस्ट बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है क्या. तो गोचर में क्या होता है, देखिए ये जो ग्रहज है, प्लैनेट्स, ठीक है, ये तो कोई स्टेबल और स्टैटिक नहीं है. जो गोचर में क्या होता है, ये सारा के सारा जो प्लैनेट्स है, ऑल दिस प्लैनेट्स आर एक्चुअली मूविंग, दे आर नॉट स्टैटिक. सो there will be situations when different planets will occupy different houses of your lagna chart. मान लीजिए आप एक चार्ट लेकर पैदा हुए हैं. जब आप जिस टाइम में पैदा हुए हैं उसका एक बर्थ टाइम का एक बर्थ चार्ट है. उसमें आप देख रहे हैं कि शनि, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, शनि इज सिटिंग एट द 5th हाउस मे बी इन योर बर्थ चार्ट. बट करेंटली अभी if I look at the present situation में हो सकता है शनि is sitting in your 9th house, because all these planets are basically changing their position, they are not static. So उसको कहते हैं गोचर, the planets are moving. तो गोचर का भी एक इफेक्ट फिलहाल हमारे चार्ट में आता है. So these things, Gochar and Dasha, Mahadasha, Antardasha period, these things will come in handy when we are trying to predict about the timing of an event. पहला क्वेश्चन तो मान लीजिए अगर मैं मैरिज का देखता हूं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लोग करता है कि मेरा मैरिज होगा कि नहीं होगा. ये दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू सी, मैरिज इसका चार्ट में है कि नहीं है. नंबर 1. नंबर 2 क्वेश्चन आता है मैरिज कैसे होगा, मतलब will it be a good marriage or there will be some problems in the marriage. That is the second question. Third question आता है कि कब होगा. तो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए दशा, महादशा, अंतरदशा और उसके साथ साथ ये जो ट्रांजिट होता है, ये ट्रांजिट के बारे में आपको पता चलना चाहिए. ठीक है ना. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, ठीक है, कैसे हमको ये प्रेडिक्शन या कैसे हम एनालिसिस करेंगे. बोला जा रहा है शास्त्रों में कि हम इस जन्म में, जो जन्म हम लोग लिए हैं, जैसे भी कंडीशन में हमारा अभी जन्म है, ठीक है, इसके why we have taken birth in this life, to enjoy the fruits of our past life karmas. Whether we are going to enjoy the fruits or we are going to have some sufferings, that depends on what we have done in our past life. Past life karma determines what challenges we are going to face in this life. ठीक है. तो एक इंसान जन्म लिया जिसको
बोलते हैं ना कि भूमिष्ठ हुआ, पैदा हुआ। तो जब पैदा हुआ, वो जो पर्टिकुलर टाइम में वो पैदा हो रहे हैं, दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज a person is getting born in a particular time because of past life karmas. Monasuni, are you understanding? Yes. Nowadays, Hmm. what happens? We choose a date for the delivery and get our children delivered Right. on that particular day. Right, So right. how when it's not a spontaneous process anymore. Hmm. So Correct. you're getting my question? Yes, yes. See, let us say 100 people wants to have their child on 25th December. But you tell me, will those 100 people, all of them get their slots booked on 25th December? They will not get. Maybe out of those 100 people, 50 people will get their slot. Now the 50 people, they want their baby to be born at a particular time, maybe say 9 a.m. or 10 a.m. Even in that case, there will be some people who will miss their slots. Okay, there will be some people who the doctor will say, no, 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 I will not be available at this time. I will do the surgery later on. So the pool gets shortened. Okay, the pool gets reduced from 50 people, maybe 250 people who are getting their desired time. Now, out of these 25 people, you will find that at least 10 people accidentally their childbirth time will get shifted. I have seen it many times. People are planning that on 1st of June they will have their baby. Suddenly some complication creeps up and they will have to go for surgery maybe on 31st. This will also be the case at times. So out of those 100 people, maybe say 10 to 15 people, they are getting their childbirth done at a particular time of their choice, right? So those 15 people, they were supposed to be born at that time only. The doctors and the parents are only acting as a, जिसको बोलते हैं निमित्त. We are only working as a tool in the hand of God. निमित्त की तरह वो काम कर रहा है. ठीक है? That child was supposed to be born at that time only. The others have played their part in this large picture to bring that child at that particular time on earth. ठीक है? तो इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि when a child is getting born, say as a parent I want my child to be born tomorrow at 12 noon. This can either happen or it cannot. Okay, if it does not happen, if the child gets born sometime earlier or maybe sometime later, then it's the will of God. At the same time, if that child gets born at 12 p.m., that is also the will of God. I am only working as a nimitta. I have no control there. You are supposed to be born at that time only. I have just played my part in being a nimitta. That way, mostly the timings can be shifted, not the date, because most of the time we are able to get our own selected choice of date. Right? No, whatever it may be, whatever it is, we will take it as a whole that the nature has wanted my child to be born on this date. Absolutely, absolutely. And you see, in a day, if I just look at the condition of India, okay, these things are more popular in the cities, right? Even today, say if in India, say 10 lakh child is getting born every day, out of those 10 lakh child, this particular privilege is available to only maybe say 1,000. The others who are getting born in government hospitals, even nowadays, they don't have that luxury. Okay, and those who are getting born as a natural birth, mostly in the foreign countries, they also don't have this luxury to choose a particular time. Okay, so the sample size is very less in that case, and even if it happens, we will consider it as the will of God. We are just being the nimitta. So a child gets born at a particular time.
So the earlier people, पहले के जमाने में जो लोग थे, पहले तो वो उन्होंने ये देखा कि हमारा आकाश में ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जिसका पोजीशन चेंज होता है. लेट अस गो बैक टू मे बी 5000 ईयर्स बैक. 5000 साल पहले हम लोग चले जाते हैं. ठीक है, तो कुछ इंसान अर्थ में है जिसको ये दिखाई दे रहा है कि आकाश में बहुत सारा ऐसा हेवनली बॉडीज दिखाई दे रहा है जिसका पोजीशन शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, और वो पोजीशन शिफ्ट होने के साथ साथ हमारा मूवमेंट ऑफ द सन. ठीक है ना? You are not audible. Could you please repeat that, sir? हाँ हाँ. Can you see now? Hello? Yes, yes. Am I I can audible? see you. Just the voice cracked. Right. As I was saying, if you see simply the position of the sun, sun is every day rising in the east and setting in the west. So people found this, that there is a repeatability in the movement of the sun. Not only that, sun also has a northward as well as southward movements. Along with this movement of the sun from north to south, people could see that the seasons are changing. And with this change of seasons, it is having its impact on the crops. When I am going for cultivation, when there will be rain, especially in India, where there is 6 seasons specifically. अभी तो उतना समझ में नहीं आता है, पर पहले के जमाने में जब पॉल्यूशन कम था, ठीक है, तो 6 सीजन पूरा डिस्टिंक्टली लोगों को मालूम चला कि सन का जब ये पोजीशन रहेगा तब बारिश होगा, सन जब यहाँ पर रहेगा नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड में तब देयर विल बी कोल्ड. तो ये सन के पोजीशन के साथ साथ हमारा सीजन का जो चेंज हो रहा है, इट वाज नोटेड बाय पीपल, एंशिएंट पीपल. उसके साथ साथ मून का चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है, मून का जैसा पोजीशन चेंज हो रहा है, उसी के साथ साथ टाइडल वेव्स जनरेट हो रहा है, टाइड्स जनरेट हो रहा है. उसके साथ साथ लोगों का इमोशन में चेंज आ रहा है. ठीक है, ये भी उन्होंने नोट किया था कि हाउ वी आर फीलिंग. Moon is directly connected with the mind of a person. How we are feeling, that gets changed with the position of the moon or the phases of the moon. पूर्णिमा में एक तरह का फीलिंग्स होता है, अमावस्या में एक तरह का फीलिंग्स होता है. ये ancient people noted this. तो उन्होंने चाहा कि जो प्लैनेट्स, पहला चीज तो है प्लैनेट्स और ग्रह ये सेम चीज नहीं है बाय डेफिनेशन. अभी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट्स को जैसे डिफाइन किया जाता है और एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में ग्रह जिसको बोला जाता है, दे आर नॉट सेम. वी डू दिस colloquial translation, we consider planets to be grahas, but grahas were those heavenly bodies which were moving. The term graha means those bodies, those astral bodies which are moving. तो वो लोग जो पहले जमाने के थे, they noted few grahas which could be noted in our naked eye. That is why the concept of Uranus, Neptune, Pluto does not come into Hindu astrology or Western astrology, because उसका जो movement, उसका मतलब naked eye में उसका movement note करना is very difficult. We could not. Through naked eye, what did we note? हम सन को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं, ठीक है, मरकरी को देख सकते हैं जो है बुध, वेनस को देख सकते हैं जो है शुक्र, मंगल को देख सकते हैं विच इज मार्स, हम जुपिटर को देख सकते हैं जो है बृहस्पति, और हम देख सकते हैं सैटर्न को, ठीक है ना, सैटर्न को जो है शनि. तो 7 ग्रहस वर अवेलेबल टू दोज पीपल. उसके साथ साथ अभी मॉडर्न डेज में 2 कॉन्सेप्ट और आ गया है, 2 हेवनली बॉडीज. क्या क्या है सुनीता जी, ये 7 छोड़कर? राहु और केतु. राहु केतु सम. राहु केतु. तो राहु केतु का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट राहु और केतु को लेकर नहीं था. दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी दे फर्स्ट डिटरमाइंड द पोजीशन ऑफ द मून. मून का भी तो फेज चेंज हो रहा है,
उसके साथ साथ मून का भी एक नॉर्थ और साउथवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। इट वाज नोटेड बाय द चाइनीज एंड दे गेव दिस कॉन्सेप्ट considering a dragon, considering a dragon. मून का जो एक्सट्रीम नॉर्थ नोड होगा, एक्सट्रीम नॉर्थवर्ड पोजीशन ऑफ द मून, वहां पर उन्होंने सोचा चाइनीज लोग कि उधर एक ड्रैगन का फेस है, एक ड्रैगन का फेस है। और जहां पर साउथ नोड है मून का, साउथ नोड मतलब मून का एकदम एक्सट्रीम साउथ पोजीशन, साउथवर्ड पोजीशन, वहां पर उन्होंने सोचा ड्रैगन का टेल है। तो वो ड्रैगन का जो सर, वो हिंदुइज्म में बन गया, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में बन गया राहु, और वो ड्रैगन का टेल बन गया केतु। तो एक्चुअली ये राहु केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज, दे आर नॉट एनी हेवनली बॉडी, दे आर बेसिकली द नॉर्थ एंड साउथ नोड ऑफ द मून, उसका पोजीशन को डिटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसी हिसाब से ही अब जब बाद में हम इसका, इस प्लैनेट्स का, हाउ दिस प्लैनेट्स इफेक्ट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये जब हम समझाएंगे आपको, तब देखेंगे कि राहु और केतु का क्या सिग्निफिकेंस है। वन थिंग हमने ऑलरेडी बोला है, मनस्विनी जी उस क्लास को अटेंड किए थे, कि 7 planets are connected with the 7 chakras of our body, right? The 7 chakras of our body are basically represented by these 7 planets. Rahu and Ketu represents our desire. Rahu represents our desire, our lust. Ketu represents our detachment. जहां पर भी राहु प्लेस्ड हो जाएगा जिस भाव में, उस भाव में आपका पूरा एकदम फुल अटेंशन रहेगा, मतलब पूरा आपका पूरा लास्ट रहेगा उस पर्टिकुलर भाव से। और जिस भाव में केतु बैठ जाएगा उस भाव से आपका डिटैचमेंट हो जाएगा। तो पहले जमाने के लोग इसको नोट किया था, और उन्होंने, आप सोचिए, मान लीजिए अभी आपका घड़ी में कितना बज रहा है, व्हाट इज द टाइम नाउ? 10:10. 10। वेरी गुड, 10:10। आप एक बात बताइए, ये जो टाइम आप देखें, ये टाइम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? फिजिकली हाउ वी डू डिफाइन दिस टाइम? हमारा घड़ी में दिखा रहा है 10:10, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको कैसे पता चले? फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं हमारा। फिजिकली इस टाइम को अगर हम डिनोट करना चाहेंगे, डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि 10:10, 29 जुलाई 2024, 10:10, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि मैं मेरा घर में बैठकर क्लास ले रहा हूं, आप लोग अपने घर बैठकर क्लास कर रहे हैं। तो वो लोग, एंशिएंट जमाने के लोग, वो टाइम का फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे निकाल रहा था? ये जो 7 प्लैनेट्स है, 7 ग्रहज है, इसका एंगलिक पोजीशन, म्यूचुअली इसका एंगल कहां पर है, हाउ दे आर प्लेस्ड इन द स्काई, इसी हिसाब से उन्होंने टाइम का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालने का कोशिश किया। और पिछले जमाने के लोग मैथमेटिकली बहुत साउंड थे, उनको मत सोचिए कि वो लोग हमसे इंफीरियर थे साइंटिफिक नॉलेज में। मैथमेटिकली वो लोग हम लोगों से बहुत आगे थे, ठीक है ना। उन लोगों को ये मालूम था कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होता है, डिग्रीज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उन लोगों के पास था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा आकाश है, टोटल कंप्लीट आकाश जिसको हम देख पा रहे हैं, इस आकाश को उन्होंने एक सर्कल की तरह सोच लिया, ठीक है। और ये सर्कल को उन्होंने 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट में कितना डिग्री आ रहा है मनस्विनी जी? 360 डिग्री को कितने भाग में डिवाइड किया? 12 पार्ट्स में। 30 डिग्रीज करके आ रहे हैं। 30 डिग्रीज, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, 30 डिग्रीज में उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। इसके साथ साथ आप सोच लीजिए कि ये स्काई तो एक्चुअली सर्कल नहीं है, इट इज अ स्फीयर, ठीक है ना। तो उसके लिए भी जो जो एंगुलर एडजस्टमेंट करना है वो लोग वो सब किया, ठीक है। वो सर्कल का एक, जिसको
इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेकर उन्होंने एंगल को कैलकुलेट करना शुरू किया कि कौन सा प्लैनेट कौन सा भाव में, कौन सा पार्ट में अवेलेबल है। ठीक है, टोटल कंप्लीट स्काई इफ यू कंसीडर इट एज अ सर्कल, ठीक है, तो सर्कल में कितना डिग्रीज होता है? 360 डिग्रीज। तो वो लोग ये सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। हर एक पार्ट को उन्होंने बोल दिया कि ईच पार्ट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। एक आदमी का जिंदगी में जो कुछ भी हो सकता है, उसका हुआ जन्म के बाद उसका शरीर कैसा रहेगा, उसके बाद उसका पेरेंट लोगों के साथ उसका कैसा रिश्ता रहेगा, ठीक है, व्हाट ही विल अर्न, उसके बाद उसका कर्म कैसा रहेगा, उसके बाद व्हाट ही विल gain in life, what kind of peace or what this person can study, उसके बाद उसका रोमांटिक लाइफ, क्रिएटिव लाइफ, ठीक है, उसके बाद उसका शत्रु, देन हिज मैरिज, देन हिज एक्सीडेंट्स और बाधा जिंदगी में, उसके बाद उसका कैसा गुरु रहेगा, what kind of higher education this person will get, what kind of job this person will do, what kind of money this person will make. Okay, every single thing that you can think about in a life of a person, life of a man or a woman, जो कुछ भी हो सकता है एक इंसान के जिंदगी में, वो सारा के सारा चीज उन्होंने ये 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, these things I will explain in details, no need to worry, I'm just showing you just a large picture of how things are working. Okay, इसको कहते हैं कास्प या भाव। सुनीता जी सुने हैं इसको, इस टर्म को, कास्प? यस, 12 भाव होते हैं, दैट हाँ, 12 भाव होता है, 12 कास्प होता है। यस, मनोस्विनी जी इतना डिफिकल्ट नहीं है। मान लीजिए आपके पास in your computer there are 12 folders. Yeah, In your I got computer, it. yes, How- there are 12 folders. Each folder contains certain aspects of your life. ठीक है, आप जैसा आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपका ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट की आप आपका मेडिकल फाइल में रखेंगे तो उसके लिए एक अलग फाइल है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से देयर आर 12 फाइल्स, 12 फोल्डर्स, ईच फोल्डर कंटेन्स और कंट्रोल्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो वो लोग क्या कर रहे थे, ईच प्लैनेट को देख रहे थे, ये प्लैनेट कौन सा भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। Do you understand Bengali? हाँ, लेकिन बंगाली में सुनीता जी को प्रॉब्लम होगा। नहीं नहीं, I'm just asking a question. That's why it will be easier for me if I ask in Bengali. That's why I asked. ठीक है, आप पूछिए, हम ये যদি আমার কাছে একটা জন্ম লগ্ন চার্ট থাকে, তাতে একটা যে হ্যাঁ। ঘর কাটা যে ব্যাপারটা আমরা দেখি, ওই এক একটা ঘরকে এক একটা ভাব বলে, এই তো? यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सुनीता जी आपको समझ में आया ना क्वेश्चन? उन्होंने पूछ रहे थे कि जन्म कुंडली में जो हम देखते हैं, जो डिविजन्स, वो एक्चुअली भाव होता है कि नहीं। दिस वाज हर क्वेश्चन, दैट इज द भाव। I will show you a Janam Kundali today itself, how it looks, especially a Krishnamurti Paddhati of Janma Kundali, how it looks, I will show you. So people started noting that which planet is present in which bhav, and they started recording the life of that person in details. तो उन्होंने देखा, मान लीजिए किसी का 10th हाउस में, 10th भाव में सन बैठा हुआ है, रवि बैठा हुआ है, तो there are some characteristics in this person. That person becomes a good leader. That person becomes gains favor from the government. That person can lead a lot of people. Okay, becomes very famous in leadership. जिसका मार्स मान लीजिए कोई 10th हाउस में बैठा है या 6th हाउस में बैठा है, उसका कुछ क्वालिटीज उन्होंने निकाला। सैटर्न कुछ जगह में बैठा है, उसका क्वालिटीज उन्होंने निकाला।
they started experimenting in thousands of charts that if a planet is present in a particular location in a particular house, what are the results? And they started noting it down and tried to formulate different formulas. उसी हिसाब से उन्होंने ये सब formulas लेकर आया कि if Mars is present in your first house or seventh house or eighth house, then you will be called a Mangalik. जो मांगलिक होगा उसका शादी अच्छा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, एक्सीडेंट प्रोन होगा, ठीक है, बहुत रक्तपात होगा, ये सब. These things have been found experimentally by looking through thousands of charts. Okay, and don't have this misconception that only Indians were doing it. The same thing were being followed by the Egyptians. The same thing were being followed by the Greeks, also by the Aztecs and the Mayas, Incas. Everyone, they are doing simultaneously, some form of the other. This thing was known, or people could identify this potential everywhere across the world. In fact, हमारा जो राशि सिस्टम है ना, अभी जो ये सब आता है मैगजीन में, या आप देखेंगे न्यू ईयर के टाइम में सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि कुंभ राशि का ऐसा जाएगा, हाँ, मेष राशि का ये होगा, वो होगा, ये सब जो बोलते हैं, ये राशि 12 राशिस इज एक्चुअली नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट. इट हैज कम फ्रॉम द ग्रीक्स. ग्रीस ने जब इंडिया से उनका संपर्क बना था 326 बीसी, ग्रीक किंग अलेक्जेंडर, किंग ऑफ मैसिडोनिया, अटैक्ड इंडिया, ठीक है. तो उसके बाद इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट थे, वेस्टर्न पार्ट में पूरा ग्रीक, बैक्ट्रियन ग्रीक्स का सिविलाइजेशन बन गया, और इंडिया के साथ ग्रीस का मतलब जो ट्रेड भी चालू हो गया. तो इंडियंस ग्रीस से बहुत अच्छा महंगा वाइन, गोल्ड कॉइन्स, ये सब इंडियंस लोगों को मिलते थे, इंडियन किंग्स को. बदले में आपको मालूम है ग्रीस इंडिया से क्या लेता था, क्या खरीदता था इंडिया से? इतना सारा गोल्ड कॉइन्स देकर ग्रीस इंडिया से क्या खरीदता था? सुनाई नहीं दिया सुनीता जी? Oh, sorry. Sir, people's knowledge? हाँ, people's knowledge. Yeah. No, not really, because Greece at that time had great philosophers. They were also stalwarts in their own merit. There were a intercourse in knowledge between the Greeks and the Indians. But what did the Greeks buy from India? Any idea, Monoswini ji? Black pepper. जिसको black pepper. Black pepper. Pepper, yes. Golmorich, yes. Black pepper. Black pepper was a delicacy at that time in Europe. That was the only available mean to season the food. So उस जमाने में ये जो सोशल इंटरेक्शन होना चालू हो गया ग्रीक लोगों के साथ, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट ऑफ राशिस, 12 राशि आ गया इंडियन सिस्टम में. ठीक है, तो पहला तो था हमारा 12 भाव, 12 कास्ट, each file folder containing each some aspect of our life. Now to qualify those results, 12 राशिस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मनस्विनी जी? सुनीता जी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Just a minute, sir. हाँ. लेकिन क्या हुआ? As Indians had great mathematicians, okay, especially during the Gupta era. Have you heard of Gupta era, Manaswini ji? Yes. During the Gupta era, during the reign of Chandragupta II, Chandragupta Vikramaditya, his kingdom had great astrologers as well as scientists, especially the likes of Aryabhatta, Borahumir. They were there, who said that, okay, 12 rashis are qualifying my results, they are making my results better, but instead of 12 rashis, we can go a bit further. So what they did, they divided each house, that means each caste, each bhav, 12 bhav the, 12 bhav, 12 caste the. They started dividing those bhavs into nakshatras.
What are nakshatras? Nakshatras are basically group of stars, constellations जिसको बोलते हैं, group of stars, इसको बोलते हैं nakshatras. तो उन्होंने क्या कर दिया, बरामीर और इसी तरह का जो मैथमेटिशियंस उस टाइम इंडिया में थे, वो केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. एक ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 30 डिग्रीज ईच हाउस, ये बहुत आसान हो जा रहा है. लेट अस मॉडिफाई आवर रिजल्ट्स, मेक इट बेटर. तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया आकाश में there are 27 nakshatras, 27 constellations. How did they identify? They found that the position of the moon, it changes every day from one nakshatra to the other. उसीलिए ही हमारा मिथोलॉजी में कहानी है ना, चंद्र का 27 वाइफ है, 27 डॉटर्स ऑफ दक्षा, जिसको चंद्रमा शादी किया था. ये सब जो कहानी हमारा मिथोलॉजी में है, एक्चुअली दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ज्योतिष. सो देयर आर 27 nakshatras identified by the ancient astrologers, and they said that now we are going to divide the sky not only in 12 equal parts, उसके साथ साथ 27 इक्वल पार्ट्स में भी हम इसको बांटेंगे. तो 360 डिग्री को अगर हम 27 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, तो each part how many degrees will come? Any idea? 13 degrees 20 minutes each part. ठीक है, 13 degrees 20 minutes each part, each constellation will contain, right? This is how we are modifying our results. Again, I'm so sorry, I'm interrupting you. Can you please repeat this part again? I'm confused. Yes. मान लीजिए मैं अगर 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो ईच पार्ट विल कम टू 30 डिग्रीज. अभी एस्ट्रोलॉजर्स, एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर्स बोलना शुरू किया, तो ठीक है, हम उससे तो थोड़ा रिजल्ट्स हमको मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट्स को और मॉडिफाई करना है, और अच्छा करना है. तो इसके लिए क्या करो, देयर आर 27 नक्षत्रस, 27 कॉन्स्टेलेशंस. अभी वो 360 डिग्री को हम 27 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे. तो क्या किया, उनको मिल गया नक्षत्रस, डिवीजन ऑफ नक्षत्रस, 27 नक्षत्रस. 360 डिग्री को आप बांटेंगे तो देखेंगे ईच नक्षत्र विल कंटेन 13 डिग्रीज 20 मिनट्स. ठीक है ना. अभी कृष्णमूर्ति पद्धति क्या है, वो जो 13 डिग्री 20 मिनट्स है, वो 13 डिग्री 20 मिनट्स को 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 9 unequal parts. 9 unequal parts. But fortunately, we will not have to do these calculations. Those calculations will already be done by the computer and we will directly get the chart. लेकिन मान लीजिए जब कंप्यूटर नहीं था, मान लीजिए आज से 40-50 इयर्स बैक, किसी को अगर कृष्णमूर्ति पद्धति अप्लाई करना पड़ता था, तो उसको पूरा मतलब एकदम जिसको आपको बोलता है एफिमेरिस, मतलब पंजिका, एकदम पंजिका लेकर बैठ के पूरा चार्ट कर और कैसे डिवाइड करना पड़ता था. यू जस्ट लुक एट द मैग्नानिमिटी ऑफ द कैलकुलेशन. 360 डिग्री को आप 12 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, ठीक है भाव. फिर उसको आप 13 डिग्री 20 मिनट्स करके डिवाइड कर रहे हैं. फिर ईच 13 डिग्री 20 मिनट्स को आप 9 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं. 9 अनइक्वल डिविजन्स, रादर not equal, 9 unequal divisions. All this painstaking task is to improve our prediction. It is to improve our prediction accuracy. हाँ, सुनीता जी. Sir, the reason behind dividing it into 9 unequal parts, it is connected with planets or just? It is connected with planets. It is connected with planets. तो सर इक्वल में होना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है. एक्चुअली यही कृष्णमूर्ति पद्धति का डिफरेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से. ओके. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यू हैव आस्क्ड अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी गुड क्वेश्चन. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये नक्षत्र को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है.
13 डिग्री 20 मिनट्स को 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब ईच पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट्स। वो चार्ट आपको दिखने में मिलता है अगर आप किसी का नवांश चार्ट देखेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में along with the लग्न चार्ट there are 16 डिविजनल चार्ट्स, ठीक है। तो जो नवांश चार्ट होता है वो नवांश चार्ट में जाकर ये इसका एप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है। ईच नक्षत्र गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति जो थे ग्रेट एस्ट्रोलॉजर कृष्णमूर्ति फ्रॉम साउथ इंडिया, उन्होंने क्या देखा कि अगर हम इस नक्षत्र को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना कर उसको अकॉर्डिंग टू दशा महादशा के हिसाब से 9 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो वी गेट बेटर रिजल्ट्स। इसी को बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति का सबलॉर्ड सिस्टम, सबलॉर्ड आ जाता है। जब दशा महादशा आप देखेंगे, ठीक है ना, दशा महादशा के टाइम आप देखेंगे कि हर प्लेनेट का इक्वल दशा महादशा नहीं होता है। सबसे ज्यादा पीरियड रहता है शुक्र का, 20 साल का पीरियड रहता है, 20 इयर्स। केतु का रहता है 7 साल का, रवि का रहता है 6 साल का, हाँ, मून का रहता है 10 इयर्स, ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच द ईच प्लैनेट्स आर एक्टिव, ठीक है। तो वो जो रेशियो है, वो जो रेशियो है, मान लीजिए वेनस इज एक्टिव 20 इयर्स बट मून इज एक्टिव फॉर 10 इयर्स, तो वेनस का टाइम पीरियड मून का डबल होगा। उसी रेशियो में वो ईच नक्षत्र का जो 13 डिग्री 20 मिनट्स है उसको डिवाइड किया जाता है। बट नो नीड टू गेट इनटू सो मच टेक्निकलिटीज। इतना टेक्निकलिटीज हम आपको बता रहे हैं जस्ट टू गिव अ आइडिया हाउ क्रिटिकल दिस कैलकुलेशन इन्वॉल्व विद कृष्णमूर्ति पद्धति इज। आपको सुनीता जी, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजी आपको मालूम है, मतलब आप जैसा आप टैरो जो भी करते हैं, टैरो तो आपको मालूम होगा, है ना। तो टैरो में आप क्या करते हैं, टैरो में यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड ट्राइंग टू गेट योर आंसर्स फ्रॉम सम कार्ड्स, राइट। बट the complication in the calculation of a Krishnamurti Paddhati astrology, आपको अगर इसको इस चार्ट को खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट टू गिव एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस इज इन्वॉल्व, और जस्ट टू गिव अ पिक्चर कि पुराने जमाने में जो लोग थे, जो ऋषि मुनि जो थे, इट इज इजी फॉर अस टू डिस्कार्ड देम, बट वो लोग हमारे से कई गुना ज्यादा बड़े मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स थे। जस्ट द sheer मैथमेटिक्स which is involved in this calculation is just huge, ठीक है। तो अभी हमारा जिंदगी बहुत आसान है, हमको ये सब कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली कास्ट आवर चार्ट, ठीक है। चार्ट कास्टिंग के लिए हमको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। What are the 3 informations? We require the date of birth of the person, birth time and birthplace. ये 3 इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहेगा, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली जेनरेट द चार्ट फॉर मी, ठीक है ना। Place information important. The place, the information of the place of birth. Why is it important? I'm sorry. सुनाई दे? हेलो, Hello. No, if you are not audible. yeah, what is your question? I'm asking if you want to create a chart for someone, why is the information of place of birth important? हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, क्योंकि मान लीजिए कोलकाता का कितना आपका लैटिट्यूड है, कोलकाता का जो लैटिट्यूड है दिल्ली का लैटिट्यूड तो सेम नहीं है, दिल्ली तो और भी नॉर्थ में है। तो कोलकाता में हमको एक पर्टिकुलर टाइम में जो दिखाई देगा, जो स्काई का जो कंडीशन दिखाई देगा, सन का जो एंगल रहेगा, मून का जो एंगल रहेगा या सैटर्न का जो एंगल रहेगा, उस सेम टाइम में दिल्ली में वो एंगल तो सेम नहीं रहेगा, उसमें तो चेंज हो जाएगा।
एंगुलर पोजीशन तो चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए Latitude is important. हाँ लैटिट्यूड इज By इम्पोर्टेंट. place we actually mean the latitude Correct, where you correct. Not only latitude, also the longitude. longitude. I mean the latitude and Yes, longitude yes. position of Yes. Earth. Correct, correct. Because what is the basically the लग्न चार्ट? कोई इंसान एक पर्टिकुलर टाइम में जब उसका बर्थ हो रहा है, उस टाइम में मैं अगर ईस्ट के तरफ फेस करके खड़ा हो रहूंगा, if I am facing east at that particular time when a child has taken birth, at that instant of time, if I am standing and facing east at that particular place, what would be the position of the sky? That is that map That is is the just the Lagna Lagna chart. That is the Lagna chart. So I'll end today's class by showing you how to cast a Lagna chart. Okay, I'll just go for screen sharing. How to cast the Lagna chart, I will show you. Can you see? No, not yet. Just a second, let me try again. Now can you see? Yes. Right. So see, this is a very popular website, free of cost. You can get this. Okay, just in Google you will get AstroSage. It Just a second. does not charge any money. Okay. Now, if you type AstroSage in Google, you will get this chart. Okay, you will get this page. So let me do my chart only. I have mine built in over there. Oh, okay. So I'm opening that. let me check my chart. Can you see what I am typing? Yes, sir. Yeah. So see, I have written my name, gender, date of birth, okay, time of birth, and the place of birth. Okay. So now I will press the show kundali. Now I'll leave all these things behind. I'll just go here at the left hand side. Can you see there is written KP system? Can you see Yes, this? sir. Yes, sir. Right. So in KP system, I'll go here and I'll just select one thing. What is that? Print KP report PDF. This one, this option. Mm-hmm. Manashwini, are you there? Yes, I am there. Yes. I'll just select this thing, print KP report PDF. So it will be saved. I'll just open it. Okay. So this is the chart. Entire thing is given here. Entire thing. Whatever you need to know regarding my birth and my death and everything in between, it is here. Where Sir, your chart is not visible. chart is not showing. Chart is not showing. Okay, No. okay. Let me. Okay, just a second. Just a second. Yes, now it will show, I guess. Now can you see? Yes, sir.
Right. So this is how a KP chart will look. This a single page. It will have all the informations regarding my birth, my education, my ailments, my marriage, uh, my earnings, and it will end till my death. Not only death, it can also indicate my previous birth as well as my next birth. Oh, a chart can indicate your previous birth as well. Absolutely, it can. This gets interesting. But no point in looking at previous birth. This birth is Just more important. curiosity. So this is my chart. See, I'll just explain how this chart, what are the aspects of this chart. In the first part, you can see all the details are there. Okay, the latitude, longitude, date of birth, my Rashi, Lagna, Yog, everything is there. Every details is there. Here, can you see this box? Can you see this box? Yes, sir. Yes, this box is actually my Lagna chart. I will explain this later on. This is the Lagna chart. And you can see at below this is the time period of the planets, the Antardasha period, Mahadasha and Antardasha period. Okay, when these periods are going to end, the end dates are given here. When up to when these periods are active, all these dates are given here. At the right hand side, what is given is cusp. That means each house, what are their degrees, where they are starting, their Rashi, Nakshatra, sublord, and sub-sublord. This sub-sublord is not important. We are going to omit this thing. This is not important for us. The last column, SS. We are going to look into this up to this sub thing. Cuspal positions, planetary positions, significance of houses, and planet signification. All this thing I will explain to you. No, you don't have to worry. My chart will be a experimental chart. Okay, many interesting things are there in this chart, and also I will look at other charts as well, charts which are already saved with me, and at the same time I will give both of you, and if others join in this class, then free session about your own horoscope. So that's what about today. We just had a very unique idea regarding Krishnamurti Paddhati or Hindu astrology. Next class onwards, we are going to move into the learning aspect. We'll start with the Rashi system, what Rashis are and what they do. Then we'll learn the bhavs, and then we'll learn how to get our predictions done. There are some unique laws and principles in KP as well. Those things also we will learn. So no problem in that. One thing I would like to request, are you people, Sunita ji, are you free on 3rd August, that is on Saturday? So timing? 9 or 9:30 at night. Sunita ji, you are there? Okay, sir. I can make it available. So when would be a good time? 9 p.m. or 9:30? When? Yes, so yes. 9:30. So 9:30. Manashwini ji, are you available on 3rd? 3rd? That is on Saturday. I guess I'm available as of now. Until any emergency comes up. But 9:30 Okay. would be preferable. Right. So instead of Thursday's class in this week, instead of Thursday, we will have our second class on Saturday. Then next week onwards, we will have our normal Monday to Thursday class. But for this week, we will have our class on Thursday. On Saturday. Sure, sir. Right. And one thing, keep one notebook handy with you, because I will give notes regarding Rashi and Bhav, all these things, notes will be given. But during practice, when I'll ask you to write down the significations of planet and all, then you need a notebook with you, notebook and pen.
So next class onward, you keep that with you. That will be helpful. Okay. So see you soon. See you on Saturday at 9:30 p.m. Sure. Yes, sir. Thanks. Thank Right, you, sir. sir. Good night. Good night. See you on Saturday. Good night. See you again. Good night, sir.